स्पोरोपोलिनिन खाली स्पोरोपोलिनिन उपरे गोटे मनकर सर्ट क्वेश्चंस टे पड़िला ताहले आमे कोन लिखिबा हला स्पोरोपोलिनिन मो हेडिंग देली ग्रीन कलर रे देखो नंबर 1 मु पॉइंट वाइज लिखुची स्पोरोपोलिनिन फर्स्ट पॉइंट रे केते बेले भी प्रोनाउन यूज करबोनी स्पोरोपोलिनिन is found on exine layer of pollen grain pollen grain विषय भी मु किसी डिस्कशन करिनी that we will discuss मतलब pollen grain रो exine layer रे sporopollenin अछि it is secreted by tapetum याकू तैयारी करे केते इंपोर्टेंट जिंस tapetum रो अछि देखु जो it is secreted by tapetum at germ pores they are absent ये माने देखा जानती नहीं यार गोटे खास जिनस हला पिले जे स्पोरोपोलिनिन is the most durable substance of biological world. It is the most durable substance of biological world अर्थात एनिमल हुंतु प्लांट वर्ल्ड कहीं एमती कहगला मोस्ट ड्यूरेबल माने कौन बहुत लंबा समय पर्यंत से लास्टिंग करि पारे देखो इट कैंट बी degraded it can be degraded by heat acid alkali or any enzyme केही ताकू नष्ट करबा भलिया कंडीशंस नांती जोथि पई कि इस पोलन ग्रेन लंबा समय फॉसिल्स रे स्टोर हे की रही पारे सो वी कैन राइट दैट इट आल्सो हेल्प इन fossilization 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 what do you mean by this fossilization that means से फॉसिल आकार रे अधिक समय स्टोर हे की रही पारे सो यू सी ए केस रे जति गुडे पॉइंट हला एमान समस्त जाक हम पई वाइटल ए पॉइंट गुडा को देखे प्रथम तो आम ये देखी परिबा it can be asked as a 2.5 mark questions उठी तार लोकेशन शॉर्ट क्वेश्चन पई जरूरी ये ताकू सीक्रेट करे शॉर्ट क्वेश्चन पई जरूरी जर्म पोरे से माने नाहंती दैट इज आल्सो एसेंशियल ड्यूरेबल सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस हला ए माने को ना हीट नष्ट करि परिबो ना एसिड ना अल्काली ना एंजाइम तेनु केही ताकू नष्ट करि पारंती नहीं दैट्स वे दे आर हेल्पिंग इन फॉसिलाइजेशन अर्थात फॉसिल थियरी रे से सहायता करे आई थिंक बर्तमान ए जो 2.5 रिलेटेड क्वेश्चंस जोटा कि एंडोसियम सहित रिलेटेड
वर्तमान तुम लिखिपर। सो आई एम इरेजिंग दिस लिवेली again we will write something here जेमती स्पोरोपोलेनिन कथा लेखा गला सेमती मु आउ गोटे वर्तमान तुम सामने रखा जाऊँगी दैट इज पोलेन किट POLLENKIT पोलेन किट। पोलेन किट सेटा भी पोलेन ग्रेन सहित रिलेटेड। लेट्स सी व्हाट इज दैट। Pollen kit is a yellowish sticky substance अठालिया जिनस sticky substance found over the एक्साइन उपरे जो स्टिकी सब्सटेंस आम देखु ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू राइट। सबु फ्लावर रे न थाए केवल एंटोमोफिलस फ्लावर केस रे हम ताकू पाइबा। ओवर द एक्साइन ऑफ entomophilous flower entomophilus what do you mean by this word entomophilous flower entomophilus रो अर्थ हला बेटा insect pollinated flower आर अर्थटा एठी एका संगे हम लिखि देबा जानिबा हला। so this is insect pollinated flower। नाउ आउ कौन पॉइंट्स रहा रहा द्वारा कौन हुए ये किए सिक्रेट करे दिस इज आल्सो सिक्रेटेड बाय tapetum it is secreted by tapetum it helps in pollination by getting stick with the leg of the insects. I am not writing that sentence jeti choto rahibo you will be comfortable with that moon. So it can also be a question of 2.5 marks. Of course 1 mark questions भी से भितर पचरा जाई पारे। So 2.5 category रे we have to get ready for this। ठीक अछि। Next Makuli Valley। Now we are going to discuss about pollen grain। सेटे भी 2.5 कैटेगरी में सेठी आनी परिबा। फर्स्ट रे हमें देखिबा स्ट्रक जो तार डायग्राम ता पोलेन ग्रेन। सो गुडे पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर ताकू हम आगो ड्रा करबा। लेट्स सी मु चेष्टा करछि गोटे छोटो चित्रटे राइट साइड रे करियाकू तारि भितर तुम देखिबो एक राउंड और ओवल शेप थाए मझिरे मझिरे we can found such swellings एटा तैयारी होछि कैलोज द्वारा ता बाहरे we are finding the exine ए जो कलर रो वर्तमान करूची एटा होछि एक्साइन रो चित्रटा को तुम आउरी बेटर करि परिबो। बीइंग ए स्टूडेंट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ड्रॉ दिस। ठीक है।
तापर सेम ब्लू कलर मु देखिबी ये जो भितरे नॉर्मली आ गोटे सेल रहिबो दिस इज कॉल्ड generative cells there are vacuoles present here let it be vacuole other color रे हमें बर्तन देखिबा nucleus this is vegetative nucleus and this is generative nucleus. So this is all about our pollen grain. Let's see, there are two membranes. The outer one, which is made up of sporopollenin, is called exine. This is called exine, E-X-I-N-E. It is made up of sporopollenin. Sporopollenin. So now within that, you see the blue layer what I have drawn here, this is intine, I-N-T-I-N-E, and this is vegetative nucleus, vegetative nucleus. The larger cell is also called vegetative cell. It is also called tube cell. Now this is a vacuole. Usually vacuoles are seen in the pollen grains, V-A-C-U-O-L-E, maybe one or two, depend on the size and type of the pollen grain. And now this is germinative cell. Germinative cell. And this is your germ pore. एठी important जिनस हला पिले तमे देखिबो जे ए जो स्ट्रक्चर ता हम देखिले दिस इज द पोलन ग्रेन यू नो दैट एवं ये पोलन ग्रेन रे हम देखिले देयर आर टू मेम्ब्रेन्स एंड देयर आर टू सेल्स दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस राइट लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिटन हियर सो pollen grain represent male gametophyte. Male gametophyte. So pollen grain represent male gametophyte, and it consists of, usually it consists of two cells. It has two membranes. First tita ko membrane koi deba. It has, or it is usually round or oval in shape. Variable shape अछि मु ताको राउंड एंड ओवल हिसाब रे दिटा को रखि देली दुटे आवाज क्लियर आसीबनी मते जणेबो. So how to write the answer, that is very important beta. Memorize करिबाटा आ ताकू लिखि करी नंबर अटेंड करिबाटा एउडा उटिके प्रैक्टिस दरकार तमनको जो मनकर इंग्लिश रे टिके वीकनेस रहउची. I advise them to write more and more to have the practice. So it has two membrane. It has two coverings, I can say. What are they? ये ठीक है लिखी दूँगी outer exine formed of से ठीक है लिखी दे पार थांदी किंतु ये शॉर्ट रे ब्रैकेट रे मु लिखी दूँगी sporopollenin. मो टाइम दा सेव हे जीवो एवं पॉइंट्स आर ऑल परे रहि जीवो sporopollenin. नेक्स्ट रहला inner, that is intine, I-N-T-I-N-E.
এইটা কিন্তু ক্যালোজ রে তৈরি হইଥାଏ বেটা জানিবা দরকার though it is not explained in all the texts তথাপি আমি জানিবা similarly it has two cells এর দুইটি সেল আছে what are they এটি লিখি দেবা vegetative cell or tube cell ताको हम tube cell भी कहूँ and it is larger cell right मतलब शॉर्टकट रे लिखि देली larger सेमिति generative cell it is smaller हला ये जो स्मॉलर सेल हला बा जेनरेटिव सेल हला अच्छा इन मोस्ट ऑफ इट जो दुईटा सेल थाए इट इज टू सेल्स इन 60% of plants or 60% of angiosperm 60% of angiosperm केस रे से थाए टू सेल्स केस किंतु बाकी 40% कौन करथांती they have three cells सेटा एठी हमें लिखिबा दरकार पड़ुनी बट ये जो जेनरेटिव सेल ये कौन करे it produces gametes so generative cell produces gametes to male gametes लिखि देले बेटर male gametes सेटा भी को प्रक्रिया रे तुम जानिछो मेल गेमेट तयारी हुए मियोसिस प्रक्रिया रे किंतु जेनरेटिव सेल रु जेतबेले मेल गेमेट तयारी होबो सेतबेले माइटोसिस यूज हुए एटा जानिबा पई लिखिली नॉट नेसेसरी टू राइट इन द 2.5 मार्क्स कैटेगरी बुझला किंतु जेतबेले मु जो 40% केस कथा कहली सेटा भी एठी मेंशन कर दवा इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स generative cell becomes gametes before pollination रो पूर्वरु से गैमेट रे कन्वर्ट हो जाता है दैट्स व्हाई आमे याकू जो 40% केस रे सेति पे 3 सेल स्टेज रहे 3 सेल्ड कंडीशन बा 3 सेल स्टेज इधर गोटे सेल हला वेजिटेटिव हाउ दीटा हला मेल गैमेट सो देयर आर प्लेंटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हियर देखो तम सामने रे अछि लेट मी ड्रॉ दैट विथ द ब्लू हाइलाइट देखो ऑनलाइन होछि लाइट ब्लू कलर प्रथम जिनस होछि मेल गेमेटोफाइट किए हला पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गेमेटोफाइट एठी पिला मन को ए शब्द रे टिक असुविधा हुए देखो मेल गेमेटोफाइट माने कोन मेल गेमेट तयारी करितवा प्लांट पार्ट हला तारो बाहर लेयर किए व्हाट इज द इनर लेयर आरो कंपोजिशन कोन it is sporopollenin tatale callose tube cell and vegetative cell both are same tube cells and vegetative cell simply generative cell je se hi duiti male gamete convert hobo so these are all important short questions for you from pollen grain so I hope more 1 marks and 2.5 marks questions can be predicted from this part right so now we will change our location from this I'm changing this okay so बर्तमान देखो आ गोटे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करिया दरकार फ्रॉम दिस सेक्शन दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज आल्सो 2.5 related questions microsporogenesis
short note category microsporogenesis can be a questions hala. So microsporogenesis को भी हमें 2.5 category रे predict करि परिबा maybe one. अच्छा, what is the process? First, the process of formation of male gamete or microspore. Microspore ही pollen grain बेटा, same thing. इठी मु लिखि देबी pollen grain. The process of formation of microspore or pollen grain is called microsporogenesis. ताले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा को कुआ जाए तारी ऊपर प्रथम सेंटेंस आंसर रहिबा एडवाइजेबल जेनेसिस. So now let's see कोठी हुए where it usually takes place हला. It develops or it occurs don't make sound. It occurs in pollen sac. Pollen sac रे हुए और केतबेले हुए parallelly with the development of the anther है ना. So from young anther जेतबेले होता है बेटा, in young anther I can write. अच्छा, complicated करबानी. In young anther at the four corner four cells get specialized to form primary archisporial cell. Primary archisporial cell. बुझिबो बोली संख्याटा तमन को कहूची, but exactly it is not mentioned anywhere. it 4 कथा नो. So archisporial cell रे से परिणत होंती. These archisporial cell, let's draw that diagram. Suppose this is the early pollen grain, sorry I mean anther. So ये जो anther रे ये जो चारटा पॉइंट रहला मु बर्तमान एठी येलो कलर रे शो करे को चाहिली. एठी गुटे सेल ये स्पेशलाइज हला, एठी गुटे स्पेशलाइज हला, चारटी कॉर्नर रे चार जन स्पेशलाइज्ड हेले. एंड these are called primary archisporial cell. Primary archisporial cell. This primary archisporial cell will now undergo mitosis to form two cells. One is outer side and one is inside. So let me write. This cell undergo mitosis to produce outer parietal cell and inner sporogenous cell. एबे जो डीप ब्राउन कलर रे जेती जिंस लेखा गला ये गुडा को भितरु ई जो इट ऑकर इन पोलन सेक टाको हमें ए ता पर दुईटा पॉइंट जोटा राउंड अप करूची एटा को स्किप करले भी चलेबो, बट बुझिबो बोली तुमको कुआ गला. बुझला.
सो मु जदि ये पॉइंट आउट करी लेट मी राइट इन ग्रीन सो यही पॉइंटा जोटा ये लिखी ग्रीन अंडरलाइन कली इट इज कंपलसरी बट दिस टू आर नॉट वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस ताकू लिखा पार पास्ट सेंटेंस जदि अधिक हो जाउची फील करछ यू कैन मिनिमाइज योर राइटिंग आल्सो तो ये जो स्पोरोजिनस सेल कथा कहली तुम मानू दिस स्पोरोजिनस सेल दे आर फिल्ड इन द पोलेन सेक भितर जी सेल अच्छा सब जाक पोलेन स्पोरोजिनस सेल थांती एवं ऑल ऑफ देम आर कैपेबल टू प्रोड्यूस पोलेन ग्रेन किंतु समस्ते करिवे बोली माने किछि नाही से मान को भितर फ्यू सेतरे पार्टिसिपेट करिवे अब बाकी कथा अलग सो नाउ सी पॉइंट लिखली द पोलेन सेक usually remain filled with sporogenous cell बुझी पारल पोलेन ग्रेन भितर स्पोरोजिनस सेल भर्ती होगी से स्पोरोजिनस सेल एबे कौन करिवो देखो प्रथम पॉइंट ग्रीन रे लिखिली द्वितीयटा ग्रीन अंडरलाइन कली लास्टटा ग्रीन लिखिली एगुड़ा को आम कंपलसरी ऐड करवा सेठी सो नाउ आई एम डिलीटिंग दिस एंड न्यू पेज विल बी एडेड हियर सो अगेन आई एम राइटिंग सेम थिंग दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द रेस्ट पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस sporogenesis. So let me draw a diagram for this. Color change करछि पिले रेड रे देखैली देखो ये जो स्पोरोजिनस सेल दिस इज स्पोरोजिनस सेल दिस इज इट्स न्यूक्लियस ये कौन होबा बढ़िबा it increase in size becomes a microspore mother cell. Now this microspore mother cell will divide mutically to form a pollen tetrad. आगुटे पछपटे रहिबा मु तीनटा देखैली टेट्रागोनल शेप बुझिलो टेट्राहेड्रल शेप तेणु ताकू पछपटटा मु एठी चित्र रे देखि परबी नाही तापरे से माने सेपरेट हो जिवे हला आ चारटा माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन रे कन्वर्ट हेबे दिस इज द मेथड जहा को आमे कहू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ए टोटल चारटी जाको आमे एबे कहबा ए मानकू दिस आर द माइक्रोस्पोर्स ये माने समझते ले माइक्रोस्पोर्स or we can write them as pollen grain or pollen grain young pollen grain रो बहुत लंबा ये अछि ताकू लॉन्ग क्वेश्चन साकार भी पढ़ी परबा सो इठी कौन लिखली एटा प्रथम जिंस वाला स्पोरोजिनस सेल तापरटा हला पोलेन मदर सेल ताकू पीएमसी कह जाय पिले एटा हला पोलेन टेट्राड एवं फाइनली से माइक्रोस्पोर रे कन्वर्ट हला सो ब्लू रे लिखि दु स्टेप देखो ये कौन हला ग्रोज टू पोलेन मदर सेल by meiosis it divides into pollen tetrads and now separates to be pollen grains हला सो इठी इंपोर्टेंट जिंस होची यार नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n यार भी 2n एठी जेति रहले समस्त n ए माने भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम समस्त पागे रहइबो सो एबे ए सेम जिंस एठी लिखिबा again I am writing with green as I told you in this answer so few sporogenous cell
becomes pollen mother cells. Pollen mother cells. pollen mother cells को हमें PMC बोली कहबा हैला से PMC कौन करिवो now they will undergo meiosis एठी लिखि देले PMC undergo meiosis to form a pollen tetrad. ये गोटे pollen tetrad रे परिणत होला. Now this pollen tetrad will divide into or separated. They are separated by dissolving the. अच्छा एठी जानिया कथा pollen tetrad एकाडी कहीं के छंदी गोटे पॉइंट लिखि देबा pollen tetrad is formed due to callose layer. Callose layer ताको bind करके रखिछि बोली tetrad के अछि. So after dissolving this layer, callose by enzyme callase CALLASE, by dissolving the callose by enzyme callase, the pollen grains are separated. The pollen grains or the microspores get separated. शॉर्ट क्वेश्चन पे जानिबा पई कोई भी पिले कालेज एंजाइम बी टापेटम सिक्रेट करे एटा तुम जानिबो बोली अलगा कलर रे मु देई दोउची लिसन जानिबो बोली कालेज इट इज आल्सो secreted by tapetum. So this is all about the microsporogenesis.